Hi, good evening, everyone. Welcome to another class where we are going to go ahead and discuss in detail CUET UG Economics 2025 solutions. I request everyone to quickly join in. I'm trying to go ahead and meet you guys more often now so that we can wrap up all the past year papers of CUET UG. And let me tell you that in any CUET UG exam, more than 10 lakh students, beta, will give this exam. More than 10 lakh students are going to go ahead and give this exam. And how many seats do we have? Very limited seats. Very, very limited seats. So I want all of you to go ahead and give your 100% in this exam so that you get in good colleges like SRCC, like Hindu, like Hansraj. कॉमर्स वालों के लिए दिस इज द एम राइट. तो हमें ये अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेना है. सो आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू टू जॉइन इन so that we can start this session, and we are going to go ahead and we are going to discuss in detail CUET UG 2025 solutions. Please join in. Hanji. So we have already done 3 parts of CUET UG solution. और आज है ये पार्ट नंबर 4. ठीक है, ये है पार्ट नंबर 4 बेटा. और इसमें हम कंटिन्यू करेंगे विद द सॉल्यूशन सीरीज दैट वी वर गोइंग अहेड एंड वी वर डूइंग. तो लुक एट दिस क्वेश्चन, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. इन द लॉन्ग रन, तो लेट अस ट्राई टू गो अहेड एंड डिवाइड टाइम पीरियड इन शॉर्ट वर्सेस लॉन्ग रन. पहले इसको हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज शॉर्ट रन वर्सेस व्हाट इज लॉन्ग रन इन इकोनॉमिक्स, एंड उसके बेसिस पे वी कैन गो अहेड एंड वी कैन सॉल्व दिस थिंग. तो लिखो बेटा, प्लीज राइट इट डाउन. शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन. देखो, शॉर्ट रन इज डिफाइंड एज दैट पीरियड, ये वो पीरियड है in which at least one factor of production is fixed. कम से कम एक, at least one. मैक्सिमम एक नहीं है, मिनिमम एक है. At least one factor of production, if it is fixed, then it is called as short run period. ठीक है. And here at least one में जैसे मैंने आपको बोला, one or more factors हो सकते हैं. Now what is the factors of production? बेटा क्या क्या होते हैं factor of production? मैम बहुत सिंपल है. The factors of production can be factory land, that means land, machinery, labor, है ना, raw material, etc. अब some inputs are fixed, that means other inputs become variable. Variable inputs का क्या implication है? What is the meaning of variable inputs? Variable inputs go ahead and mean that they can be varied. Varied means it can be changed. Can be changed. So long run period is that period in which few inputs can be changed and few inputs will remain fixed. जैसे for example, sorry, short run period, हाँ, in which few inputs can be changed and few will remain fixed. जैसे for example, short run में I may not be able to
चेंज द अमाउंट ऑफ लैंड, मैं जमीन नहीं चेंज कर सकती हूँ, जितना लैंड है उतना ही है. आई कैन नॉट चेंज द अमाउंट ऑफ मशीनरी, बट आई कैन चेंज द अमाउंट ऑफ लेबर, आई कैन चेंज द अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल. तो इन शॉर्ट रन ये हो गए मेरे फिक्स्ड इनपुट्स, एंड इन शॉर्ट रन ये हो गए मेरे वेरिएबल इनपुट्स. अब हम बात करेंगे लॉन्ग रन पीरियड की. In economics, a long run period is defined as any period in which all factors of production are variable. In which all factors of productions are variable. माने there is no fixed factor of production. सब कुछ वेरी कर सकते हैं. And since there is no fixed factor of production, because everything can be varied, nothing is fixed. Therefore, there is no fixed cost. There is only वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है बेटा, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट है. ओनली वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है. अच्छा, नाउ इन शॉर्ट रन हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ जाता है विच इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स. माने शॉर्ट रन में बिकॉज सम फैक्टर आर फिक्स्ड, क्योंकि कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड हैं, एंड सम फैक्टर्स आर वेरिएबल, कुछ वेरिएबल हैं, दैट इज व्हाई वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न. डिमिनिशिंग रिटर्न में क्या होता है? द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल इनपुट. जैसे अगर मैं बोलूं कि कैपिटल इज फिक्स्ड इन शॉर्ट रन एंड लेबर इज वेरिएबल, तो जब हम मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर निकालेंगे we'll find that this is diminishing. Marginal product of the variable will be diminishing. और इसका रीजन क्या है? We know this. The reason is law of variable proportion. क्या रीजन है इसका बच्चे? The reason is law of variable proportion. ठीक है. On the other hand, in the long run हम बात करते हैं, in long run we focus on the concept of returns to scale. So in long run there is no concept as variable proportion, क्योंकि everything is variable ना, सब कुछ वेरी कर सकता है. तो यहां पे आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न्स टू स्केल. और रिटर्न्स टू स्केल क्या कॉन्सेप्ट है बेटा? इन विच वी चेक हाउ आउटपुट चेंजेस as all inputs change. माने अगर मैं कैपिटल को डबल कर दूं, लेबर को डबल कर दूं, तो मेरा आउटपुट कैसा रहेगा? If I check this, that if I double capital, if I double labor, how my output is going to go ahead and change, कैसे मेरा output change होगा? That can be said as the law of returns of scale. This is what we call as the returns to scale. ठीक है. तो I hope the difference is clear between short run and long run. तो अब एक हम we'll make a difference. This is short run and this is लॉन्ग रन. एक शॉर्ट रन हो जाता है, एक लॉन्ग रन हो जाता है. राइट बेटा, प्लीज राइट डाउन. यहां पे आ जाते हैं हमारे इनपुट. राइट,
In short run, some inputs are fixed. In long run, all inputs are variable. In short run, therefore, the cost are two, fixed and variable cost. मतलब अगर मुझे short run में cost निकालना होगा, then we can go ahead and say that the short run cost, total cost, is total fixed cost plus total variable cost, right? Whereas when we talk about the long run, because all inputs are variable inputs, so we can say that total cost will be total variable cost. So in short run, we can go ahead and say that total cost will have fixed and variable cost. But in long run, we can say total cost will be total variable cost. Is it clear? Okay. Now, this is about the cost beta. अब हम बोल सकते हैं that in short run there will be law of diminishing return. In long run there is law of return to scale, right? In short run एक और चीज आ जाता है which is only related to perfect competition. And what is that thing which is related to perfect competition? We know that in short run we notice that we can have entry or exit of the firm, but in long run we attain equilibrium. In long run we attain equilibrium. ये बात समझ में आती है? Is it clear? So this can be the difference between your long run and short run. Okay, अब क्वेश्चन देखते हैं. In long run, what happens? At least one of the factor is varied. ना, ये definition नहीं है. कोई एक वेरिएबल होगा, डेफिनेशन नहीं है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, बट वी आर नॉट गिविंग डेफिनेशन बेस्ड ऑन वेरिएबल. We always give definition based on fixed. So in long run, at least one of the factor is fixed. We always give definition based on fixed कि सारे में से कोई एक at least fixed होगा. Something has to be fixed, right? Not something has to be variable. All factors of production can be varied? No. Because at least one has to be fixed. तो सबको तो वेरी नहीं कर सकते ना, क्योंकि किसी एक को फिक्स होना जरूरी है. At least one has to be fixed. Factors remain fixed? No. Factors don't remain fixed. Why factors don't remain fixed? Because one is also variable. Only one factor can vary. Not necessary. दो भी वेरी कर सकते हैं. Like raw material and labor. Like raw material and labor. Right? So, sorry, this is short run. That at least one of the factor is fixed. Right? At least one of the factor vary. कोई एक vary करेगा या सारे vary कर सकते हैं. So I gave the entire answer based on short run. I thought it says in the short run. और हमने सब कुछ short run के हिसाब से लिखते हैं. We'll again do it better. In long run, at least one of the factor can be varied? No. Long run में all can vary, not one.
All factor can be varied, yes, all can be varied. I give the entire answer based on short run pehle. Factor remain fixed, no. Factor remain variable. Only one factor we can vary, no, all have to vary. तो करेक्ट आंसर विल बी 2. मैंने पहले शॉर्ट रन के बेसिस पे आंसर दे दिया था, राइट? सो आंसर विल बी 2. ओके, ठीक है बेटा. नाउ लेट्स गो अहेड एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. गो अहेड, ट्राई द नेक्स्ट वन. The difference between revenue and cost is known as. So revenue minus cost is called profit. Pi. अच्छा, यहां पर आई वॉन्ट टू टीच समथिंग टुडे. सो देर आर टू काइंड ऑफ प्रॉफिट. दो तरीके के प्रॉफिट होते हैं. एक होता है इकोनॉमिक प्रॉफिट और एक हो जाता है अकाउंटिंग प्रॉफिट. प्रॉफिट आर ऑफ टू काइंड्स. इकोनॉमिक प्रॉफिट एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट. बेटा इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है टोटल रेवेन्यू माइनस इकोनॉमिक कॉस्ट. ठीक है. अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है टोटल रेवेन्यू माइनस अकाउंटिंग कॉस्ट. ठीक है. अब मैम व्हाट इज दिस? मैम हाउ डू वी डिफाइन व्हाट इज इकोनॉमिक कॉस्ट एंड व्हाट इज अकाउंटिंग कॉस्ट? बड़ा सिंपल है बेटा. व्हेन वी से इकोनॉमिक कॉस्ट, तो इकोनॉमिक कॉस्ट में आता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट. और जब हम बात करते हैं अकाउंटिंग कॉस्ट का, दैट इज ओनली एक्सप्लिसिट कॉस्ट. इकोनॉमिक्स में वी यूज दिस. अब मैम व्हाट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड व्हाट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट? प्लीज एक्सप्लेन दैट. तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो जाता है कॉस्ट ऑन ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे कॉस्ट ऑफ बाइंग रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ पेइंग द लेबर वेजेस, पेइंग रेंट, पेइंग इंटरेस्ट. ये सारा का सारा हो जाता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट. एक्सप्लिसिट कॉस्ट माने कॉस्ट जो हम देख सकते हैं, एक्सटर्नल रॉ मटेरियल पे जो लग रहा है, दैट इज बेसिकली योर एक्सप्लिसिट कॉस्ट. नाउ व्हाट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट? इम्प्लिसिट क्या है? सो इम्प्लिसिट कॉस्ट इज द कॉस्ट which is on internal resources. internal माने बेटा सपोज आज मैंने एक इंस्टीट्यूट स्टैंड खड़ा किया. इस इंस्टीट्यूट में मैं खुद एक टीचर की तरह आई एम टीचिंग. अब एक बार जरा सोच के बताओ कि अगर मैं कहीं बाहर किसी कॉलेज में, इफ आई वुड हैव टेकन द क्लासेस, तो मुझे इस कॉलेज से सैलरी मिलती. तो जब मैं अपने खुद के इंस्टीट्यूट में, व्हेन आई टीच इन माय ओन इंस्टीट्यूट, तो मेरा एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो रहा है. और क्या है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? कि आई एम लूजिंग दिस सैलरी जो मेरे को किसी और इंस्टीट्यूट में काम करके मिलती. आई एम लूजिंग दैट सैलरी, मुझे वो सैलरी नहीं मिल रहा है. आई एम लूजिंग आउट ऑन द सैलरी व्हेन आई वर्क इन माय ओन इंस्टीट्यूट. है कि नहीं है? तो दैट इज माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम बोल सकते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट. जब भी हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे इन अकाउंट्स की जगह इकोनॉमिक्स में,
अकाउंट्स में टोटल कॉस्ट में सिर्फ एक्सप्लिसिट लोगे, बट इंस्टेड ऑफ अकाउंट्स जब आप इकोनॉमिक्स में टोटल कॉस्ट निकालोगे, देन यू आर गोइंग टू गो अहेड एंड टेक बोथ योर एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। बात समझ? ठीक है। सो यहां पे व्हेन वी राइट प्रॉफिट, ये प्रॉफिट हो जाता है इकोनॉमिक प्रॉफिट और ये कॉस्ट हो जाती है इकोनॉमिक कॉस्ट। ठीक है जी, क्लियर होती है बात? ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Dash of an input is defined as the change of output per unit of input when all other inputs remain constant। तो देखो दो चीजें होती हैं, आप लोग सब मैथ्स स्टूडेंट्स अगर हो तो ये थोड़ा सा अवेयरनेस आप लोगों को खुद से आ जाएगा। देखो, एक होता है बेटा पार्शियल डेरिवेटिव, आई एम नॉट श्योर इफ यू नो दिस, इफ नॉट तो छोड़ देना कॉन्सेप्ट। बेटा पार्शियल डेरिवेटिव तब निकालते हैं जब हमारा कोई भी वेरिएबल दो इनपुट्स का फंक्शन हो, दो चीजों का फंक्शन हो। माने यहां पर z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। तो अगर मुझे निकालना है कि कैसे z चेंज होगा व्हेन x चेंजेस, तो इसको हम बोल देते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। शायद ना पता हो, नो प्रॉब्लम, बस समझ लो थोड़ा सा। माने इसमें हम देख रहे हैं कि z x की वजह से कैसे चेंज हो रहा है, होल्डिंग y कांस्टेंट, y को कांस्टेंट रखते हुए z x की वजह से कैसे चेंज होगा, हाउ इज z चेंजिंग व्हेन x इज चेंजिंग, होल्डिंग y कांस्टेंट। ये हो गया मेरा पार्शियल डेरिवेटिव। अब यहां पे भी यही बोल रही है कि सपोज मेरा आउटपुट जो है वो फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल है। आई एम आस्किंग हाउ माई आउटपुट विल चेंज एज लेबर विल चेंज, होल्डिंग कैपिटल कांस्टेंट, कैपिटल को कांस्टेंट रखते हुए, होल्डिंग कैपिटल कांस्टेंट। I am asking how my output will change when my labor will change. So this is called as the concept of marginal product of labor। यही तो marginal product of labor बोलते हैं। क्या बोलता है marginal product of labor? कि how your output will change when your input will change, है ना? That is marginal product of labor। Clear हुई बात? Okay, so next concept देखो, consider the production function q is a function of x1 and x2 where firm produces q amount of x1 amount of factor 1 and x2 amount of factor 2, x1 amount of factor 1, x2 amount of factor 2। firm decides to increase employment level of both the factors by t। माने फैक्टर 1 को हमने स्केल कर दिया एंड फैक्टर 2 को भी हमने स्केल कर दिया। आइडेंटिफाइड द इक्वेशन फॉर डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अब ध्यान से समझो, बहुत इजी है। देखो सपोज q इज इक्वल टू x1 टू द पावर 0.2, x2 टू द पावर 0.3। सबसे पहले रिटर्न्स टू स्केल, हाउ टू चेक रिटर्न्स टू स्केल मैम? व्हाट इज रिटर्न्स टू स्केल? पहले तो व्हाट इज रिटर्न्स टू स्केल? returns to scale basically is how output changes when inputs are scaled। जब हम inputs को scale करते हैं, when we scale the inputs, how output changes, output कैसे change होता है, that is the concept of returns to scale। ठीक है। अब suppose if I double my inputs, डबल मतलब डबल जरूरी नहीं है, किसी भी एक फैक्टर टी से आई स्केल माई इनपुट, तो जो न्यू आउटपुट जनरेट हो रहा है
if it is more than t times the original output, मैंने अपने इनपुट्स को जब स्केल करके उसको फंक्शन में डाल के न्यू आउटपुट जनरेट किया, it is more than old output times t, then I can say it is increasing returns to scale. कि न्यू आउटपुट जब हमने इनपुट्स को स्केल किया, मतलब अगर मैंने सपोज इनपुट को डबल किया और आउटपुट 4 टाइम्स हो गया सपोज, तो इट इज मोर देन 2 टाइम्स द आउटपुट इटसेल्फ ना। अगर मैं आउटपुट को सिर्फ डबल करती, उससे बेटर तो ये हुआ ना कि हमने इनपुट्स को डबल किया, मेड माय आउटपुट 4 टाइम्स, मोर देन डबल हो गया आउटपुट। सो इफ माय आउटपुट इज मोर देन डबल, then it is called as IRS, increasing returns to scale. Right? Is it clear? Okay. Now, the second one is called as DRS, decreasing returns to scale. Decreasing returns to scale में अब क्या होता है, that when we double our inputs, तो जो आउटपुट बनता है it is less than doubling the output itself. मतलब अगर हम आउटपुट को स्केल करें तो it will give more as compared to scaling inputs and generating output. This is called as decreasing returns to scale. एक एग्जाम्पल अभी दूंगी मैं हर चीज का. And if these two are equal, then it is called as constant returns to scale. Clear? अच्छा, अब देखो ध्यान से, यहां पे एक एग्जाम्पल लेते हैं हर चीज का. So for example, if I say y is k to the power 0.5, l to the power 0.6, तो सबसे पहला इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल देखने का इजीएस्ट वे इज टू ऐड द पावर्स, अगर ऐसा फंक्शन है तो. सो इफ आई ऐड द पावर्स, आई विल गेट 1.1 which is more than 1. So I can say that it is increasing returns to scale. अब क्या कर सकते हैं? How can I check it? So I am going to scale k by 0 by t and l को भी t से scale करेंगे. So this will give me t to the power 0.5, k to the power 0.5, t to the power 0.6, l to the power 0.6. ठीक है. अच्छा, अब what I can do is I can add this together. 0.5 plus 0.6 is 1.1. k to the power 0.5, l to the power 0.6. और आप ये देख सकते हो that this is my original production function. ये original value of y है. तो जो न्यू आउटपुट जनरेट हुआ वो ओरिजिनल आउटपुट का t इंटू 1.1, t टू द पावर 1.1 था. आई मल्टीप्लाइड इनपुट्स विथ t, बट आउटपुट गॉट मल्टीप्लाइड विथ t टू द पावर 1.1. तो न्यू आउटपुट इज मोर देन t टाइम्स द ओरिजिनल आउटपुट, क्योंकि उसका पावर इज t टू द पावर 1.1. इट इज मोर देन t टू द पावर y. So I can say that this is increasing returns to scale. Similarly, आप देखोगे, if you look here, you will notice that this production function, this will be decreasing returns to scale. Easiest way to ये है, you add the powers. If it is less than 1, it is DRS. It is DRS. But you can scale and check also. ठीक बात है. Okay, so now let's look at this question. तो क्वेश्चन कहते हैं कि you are given this and we have to find the condition of decreasing returns to scale. So decreasing returns to scale का मतलब क्या हो गया कि if I scale the inputs, then the output which I get is less than initial output into the scale. So answer should be
3. 3 is the answer to this question. Returns to scale concept absolutely clear हुआ बेटा? Is it clear what returns to scale is? ठीक है जी. Next question देखो. The change in total cost per unit change in output. So how total cost changes as output changes? बेटा ये तो कुछ नहीं है. This is marginal cost. Short run marginal cost. ठीक है. Okay. The shape of average cost curve is, तो AC curve कैसा दिखता है? Average fixed cost बोला है. हाँ, तो we will look at average fixed cost अभी soon. इसकी सारा properties लिखेंगे. But average fixed cost curve looks like this. So we can say it is rectangular hyperbola. क्या हो जाता है ये? Rectangular hyperbola. Okay, so let's write it down. Properties of average fixed cost. ठीक है. सबसे पहले what is average fixed cost बेटा? Average fixed cost is total fixed cost divided by output. ठीक है. अब हमें पता है कि total fixed cost is constant. Total fixed cost तो fixed है ना. So suppose fixed cost is 100. तो when my output is 1, तो total fixed cost by output हो जाएगा 100 by 1 माने 100. When my output is 2, total fixed cost by output हो जाएगा 100 by 2 माने 50. When my output is 3, total fixed cost by output हो जाएगा 100 by 3 माने 33.34. So we notice that average fixed cost continuously changes and falls. 1 का था 100, 2 का हुआ 50, 3 का हुआ 33.34. So this is my average fixed cost. So number 1, average fixed cost is downward sloping. अब दूसरा प्रॉपर्टी देखो. See, if I pick any point, जैसे point A, B या C, and I find area under the curve, तो इसका एरिया कर्व का क्या आएगा? ये एरिया क्या बनेगा बच्चे? What will be this area? मैम सिंपल, लेंथ इंटू ब्रेथ, 100 into 1 माने 100. If I ask you, tell me this area, तो ये एरिया क्या आ जाएगा? Very simple, length into breadth, 50 into 2 माने 100. If I find this area, तो very simple, 33.34 into 3 माने 100. So I notice that the area is always the same. Whenever the area under curve are same, so it is a property of rectangular hyperbola. किसका प्रॉपर्टी होता है? It's a property of rectangular hyperbola. Another property of average fixed cost is that it never touches any axis. It never cuts any of the axis, ना x axis ना y axis. देखो, to cut x axis, ये मेरा output है, this is my AFC. If I have to cut x axis, it means my y value has to be 0. Y पे क्या आ रहा है? What am I getting on the y axis? AFC. अब if I have to make AFC 0, तो I know anything divided by infinity is 0. तो AFC क्या है? AFC है TFC by output. So if AFC has to go towards 0, it means output should be infinity. Output तो infinity नहीं हो सकता. Output cannot be infinite. It has to be some number, na? It cannot be infinite. So because denominator cannot be infinity,
तो ये चीज cannot go towards 0. It will be close to 0, but 0 नहीं हो सकता है. So it cannot touch the x-axis. Now let's think about the y-axis. Y-axis touch करने के लिए it means x variable has to be 0. X variable 0 मतलब output has to be 0. But maths में simple rule है rational number का p by q where q is not equal to 0. तो average fixed cost जो है that is total fixed cost by output. Output should not be 0. So it neither cuts the x-axis, it nor cuts the y-axis. So average fixed cost number 1, it is rectangular hyperbola. Number 2 does not cut the x-axis. ये अच्छा property है इसका. You have to remember this. Number 3, average fixed cost cannot be 0. Because average fixed cost माने एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बाय आउटपुट ना, और ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है. सो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव 0 तो नहीं हो सकता है. सो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैन नॉट बी 0. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैन नॉट बी नेगेटिव. इज इट क्लियर? सो इट विल कंटिन्यूअसली फॉल. जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जा रहा है वी नोटिस AFC इज फॉलिंग एंड इट इज फॉलिंग एट हायर रेट. देख रहे हो आप? इट फेल ऑल द वे फ्रॉम 100 to 50, फिर 50 to 33.34. So it decreased by 50 here. It decreased by 20, by approximately 17 here. So it kept on decreasing at a decreasing rate. पहले 50 से डिक्रीज हुई, फिर 17 से. सो इट इज डिक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट. डिक्रीज तो हो रहा है पर कम और कम और कम और कम से. सो इनिशियली इट विल ड्रॉप शार्पली. पहले बहुत ज्यादा डिक्रीज हुआ, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर थोड़ा कम हुआ. सो इट कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस, but it will never become 0. Okay, we'll end here for today. So AFC ka property, I hope it's clear to all of you. All properties of AFC. Huh? Okay, beta. Thank you.